Recording. Namaskar. We are back with the second part of our conversation, which we were, or discussion, whatever you want to call it, on this all of a sudden, the cacophony all around us about dismantling Hindutva. I would like to ask Rakesh Naik ji to continue. Okay, so my thoughts are, there is always a question many people ask: why is that it is gaining so much of prominence again? The reason being, India is a demographically very young country, with majority of the population being very young. So, if you catch them now, you catch them for very long. I think this is a thinking, and that's the reason why it actually, all of this starts in the universities, in the alma maters of some of the Ivy Leagues. And, you have the historians and academicians, you are always, finding all these, anti-India movements emanating there. Now, if you look at CAA, if you look at farmers' protest, if you look at practically every movement, they've all come from the schools and universities. So that's why I think they catch that very early. And it's also easy to influence young minds. They are always very rebellious. If you look at the parents and the kids, they're rebellious. Anyone going against the parents, they latch onto it very fast, because that's the age, the adolescent, the teenage. So I think the reason is, there are a couple of reasons where I wouldn't call Hindu culture has failed, but I think Hindu has never been a political force ever. If you look at all the other Abrahamic religions, they have always had an religion and politics included. If you look at the Islamic prayers, there is a Friday prayer where they have a political discourse. If you look at the Sunday mass for Christians, they have a political discussion. There isn't anything like that for Hindus. So we purposely kept Hindu conscience is very individualistic. You are actually told develop inside, not outside. So that's why the unity is very difficult. You are bringing in a psyche which doesn't like to actually have the commonness. So what we all feel is the disability of Hindus is actually a reason why we are surviving, because we are individualistic. We can't be rubbed off. It is very difficult for everyone to be rubbed off at one time, because we keep changing, we keep flexible, we keep adjusting. So I would not want to say that the unity is missing. I would say the cohesiveness is missing. You can be, you can combine a lot of Marwadis into a thinking and then say support a cause. You can bring in a lot of Telugu guys into a cohesion and then bring them to a certain cause, rather than just trying to say, please come as a jihadi style. That doesn't work. We are not a rule-based order. We don't have any rules. I am a different Hindu than any of you guys are. So this is also a problem. This is also a benefit. The second is, if they don't attack India now, they can never attack India ever again, because we are young. The next generation is going to rule it for the next 35, 40 years. So take them down now. So it's just that. And then who is funding it? There's a lot of money flowing in. There's a lot of activism. And if you look at the policies of the government of India, they have cut down on the NGOs, they've cut down on the foreign funding, they have cut down on all these media and all that. So I think, for people who feel government is not making noise, they are making noise, but they just don't want to attract a lot of bad attention. See, unfortunately, we are still very susceptible there. Surinder ji. Yeah. सुरेंद्र जी, मुझे कभी कभी लगता है कि जब से हमने देखा है कि रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, एंड एक हमारा ग्रुप है जो दे हैव बिकम तालिबान एपोलॉजिस्ट्स, दे आर ट्राइंग टू से व्हाइट वॉश द तालिबान, एंड डोंट यू थिंक इट इज अ बिट सस्पिशियस कि वही टाइम में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व भी आ गया? डू यू फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन द टू? कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने कहाँ जा रहे हैं, क्या स्टैंड अपने लेना चाह रहे हैं। तालिबान की बात आती है, वो कल परसों दिग्विजय सिंह ने पूछा था ना कि क्या सरकार मान गई तालिबान है, उनसे बात करना चाहती है, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहती है। तो लोगों ने पूछा उसको कि तुमको क्या तकलीफ हो रही है, डिसीजन होगा। तो कितनी बातें चूटी काटने के लिए बोली जाती हैं जो कांग्रेस करती है, और तालिबान। और आज शायद कौन बोल रहे थे नेता कि कुछ ऐसा मत करना कि
20 करोड़ मुस्लिम को आप नाराज कर दो, तो कौन नाराज कर रहा है? हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे संगठन कर रहे हैं, तो हमारे संगठन करने से वो नाराज होते हैं, तो उस नाराजगी का तो प्रॉब्लम नहीं, अब कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या इस सरकार ने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसको आप एंटी माइनॉरिटी या एंटी मुस्लिम्स बोल सकते हैं? इतनी योजनाएं बनी, इतनी गैस सिलेंडर दिए गए, मकान बने, पाइपलाइन बनी, बिजली घर घर में गई, क्या वो देख के हुआ था कि एक सड़क में पाइपलाइन जा रही है तो कौन से घर दूसरों के वहां मत लगाना, उनको गैस मत देना? और सबसे बड़ा हाथ इसमें आप मीडिया का देखेंगे, ऐसे लोग जिनका नाम मैं भी लेना नहीं चाहता, और कई अपने इंटरनेट मीडिया भी, जो जिनका काम ही इन बातों को फैलाना है कि ये किया, ये किया, ये किया। एक पॉलिटिकल है, उन लोगों का इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वो पे करते आए हैं, कर सकते हैं, उनके पास था, बट हाउ लॉन्ग? उनको भी तो सस्टेन करने में मुश्किल आएगी ना। पहले 5 साल में, एक बार सोनिया ने कहा भी था प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद में, कुछ प्रेस वालों को पार्लियामेंट हाउस में मिली तब, ओ विल बाउंस बैक, वी ऑलवेज हैव। उसके मन से, उसकी आवाज से ये लग रहा था कि एनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टिंग अटल जी इज वन नेवर कंप्लीटेड अ टर्म, तो ठीक है, फिर फ्लूक हो गया है, फिर सरकार आई है, चली जाएगी। लेकिन उस 5 साल में देखिए, कांग्रेस ने उतनी बदमाशी नहीं की, उतनी छेड़खानी नहीं की जो 2019 के बाद कर रही है, क्योंकि सेकेंड टाइम जो रिटर्न हुआ तब उनको खलबली लगी है कि अब हमें मुश्किल है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसपे क्रिटिसाइज करें। अब देखिए, मैक्सिमम ऑफ देयर स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन। लगता है मुझे जो गॉगल से किताब उन लोगों ने लेके बैठे हैं, उसमें से लेके एक एक चीज की बार बार झूठ बोलते जाओ। और राहुल बोले जा रहा 5 दोस्त का रुपया, 5 दोस्त को रुपया दे रहा है, 5 दोस्त को रुपया दे रहा है, तो भाई कोर्ट में जाके उन 5 दोस्त को क्यों नहीं पकड़वा देते हो? फाइल केस कि हाँ गलत काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डूइंग द कंट्री लाइक दैट, वो क्यों नहीं कर रहा है? तो वो लोग जो कर रहे हैं, कांग्रेस को खाली एक ही चीज के लिए मैं क्रेडिट दे सकता हूँ कि राइजिंग सन को बहुत पहले पहचान लेते हैं। 2001 में इन्होंने मोदी को पहचान लिया था, और तब से उसको पीटने लगे थे, लेकिन सके नहीं। अभी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे ख्याल जितने उसको उसकी टांग खींचने में लगे हैं, उससे ज्यादा उनको सपोर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। लोग मिले नहीं है, जानते नहीं है पर्सनली, कोई भी वास्ता नहीं है, उनको लग रहा है एक आदमी ठीक कर रहा है। ठीक है ना मेरा। ठीक है। नटराजन जी, मैं सुरेंद्र जी से एक वर्ड लेके, जैसे उन्होंने गोबल्स के बात की, आपने देखा होगा, यू हैव नोटिस दैट दे आर इक्वेटिंग आरएसएस एंड द राइज ऑफ हिंदुइज्म टू द थिंग्स व्हिच हिटलर हैज डन. दे आर इक्वेटिंग हिंदूज टू the fanaticism that we had seen in Germany. What do you think? Means why are they going for all these, I don't even know what to call it. मेरे पास शब्द नहीं है इनके बेवकूफियों के लिए. आपको क्या लगता है? Why are they equating the situation to Germany before World War II? See, in my view, my voice is coming across? Yeah. Okay. I think in my view, what's happening is, again, जैसे सुरेंद्र सर ने बोला था, 2014 was okay, but 2019 it was a big shock for them with an increased majority, and now उनको क्या लग रहा है कि हम irrelevant होते जा रहे हैं because of the unity that is coming in. Okay, so they are trying to bring in through all their channels. They got, like a company having multiple distribution channels, इनका भी multiple distribution channels है. एक तो है, the Hollywood people, the Bollywood people, they start taking nonsense. Okay, then you have the so-called journalists. Okay, they start writing. I call, there are Indians, I call them in multiple categories. One is, we have resident Indians. ठीक है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, देन वी हैव नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस है. Okay, so these not required Indians,
they create a so-called problem because उनको भी पैसे चाहिए, उनके रोजी रोटी पे, when it is a matter of रोजी रोटी, उनको भी जाकर कुछ करना पड़ता है. Okay, and as Rakesh Naik said, they want to create trouble in the young minds. They want to create a dissonance in the young mind as to, one of the classical thing is to point out at what you are, at your family, at your societal structure, at your religion, that it's such a stupid thing that you are doing. We all have faced it. मैं तुमको ही फोन कर रहा था, सानू एक बार आओगे क्या, कोई प्रॉब्लम आ गया है. So we all have faced it. That's why many of us today are ex-seculars. We also started believing it, and then believe me, I have gone through that. Even I have gone through somewhere the awakening, somewhere the awakening came in, and we realized that we are being taken for granted and we are being made fools out of. Yeah. And then when we start, acting together, then it's creating a lot of heartburn for these people. I mean, the kind of agenda that these people are today. I was looking at a video of Sham Sharma. Okay, that video is so illustrative on what these people are trying to peddle. They're trying to, show whatever is possible that RSS is the cause of the problem. Okay, and in the same breath, they are unable to answer. If RSS and India is such a problem, then why so many refugees are coming to India? After all, we are a fascist state. It's a contradiction. Irony is actually committing suicide again and again. Exactly. Okay. India is a fascist country, but they don't want to go outside to their, favorite land. So many lands are there. No, they won't go. They want to sit in India, abuse India, eat Indian food, and then say that whatever you are eating, it came from the invaders' culture. Are Baba. India, the dharma. You see, today I was I've written about it multiple times that some of the ill-educated, ill-informed Bollywood actors, okay, they think that India is a construct of the recent 75 years. They forget that Bharata as a concept has been there for eons. That is why, we, so many common practices in some form or other, that is there. Agar aap dekhenge, for the simple thing, the Tamil New Year Day, April 14, you have Rongali Bahu in Assam on the same day. Almost on the same day, आपको पंजाब में दूसरा festival है. Or you look at multiple things. You have Andhra, Karnataka, and Maharashtra celebrating their New Year together. What is that unites? There are so many smaller, I'm talking about the bigger known festivals, but there are so many small regional festivals, that are celebrated across the breadth of India. Sure. It's because Bharata as a concept existed before, and these people are very, very afraid. The good thing is that overseas also the universities that have been tagged, they have taken cognizance that their names have been taken into it inappropriately and have disassociated. And I would give credit to a lot of the people working, Indians overseas, who have worked against this. But that video that I was referring to of Sham Sharma, I think is a very, very enlightening video, where he throws up on everything. I can't be as eloquent as him. He has done a lot of research and then blown it open.
Yeah, exactly. I regularly watch श्याम शर्मा. राकेश अग्रवाल जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ. ये जो यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है और आज वो यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं कि हमें बिना बताए इन लोगों ने हमारा नाम लिया. अब वो तो हमको भी समझ में आ रहा है, क्रेडिबिलिटी देने के लिए, खुद को क्रेडिबिलिटी देने के लिए बड़े बड़े हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज का नाम ले लिया. मगर जब आपको मैं बता रही हूँ, ये प्रोग्राम के पहले मैं जब रिसर्च कर रही थी इस विषय पे, एंड मैंने जब उनके उनके खुद की साइट पे क्लिक किया, तो इट इज अंडर रिकंस्ट्रक्शन, वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स. मतलब दे हैव नथिंग बट वन थिंग, एंड वो है हेट्रेड फॉर इंडिया. एंड जैसे सभी पैनलिस्ट ने बोला है, हेट्रेड फॉर अ रिसर्जेंट इंडिया. एक इंडिया जो आज और उनके दया पे जीने के लिए तैयार नहीं है. एक इंडिया जो आत्मनिर्भर हो रहा है. क्या यही उन लोगों का सबसे बड़ा दर्द है? वो तो ऑब्वियसली सबने ही वही बोला है. आपका विचार हम जानना चाहेंगे. देखिए, ऐसा होता है, जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटीज का नाम डाला, अगर इन यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं होगा तो इनके प्रोग्राम को हाईलाइट नहीं मिलेगी. पहली बात तो ये. दूसरी बात, आप मेरे से पहले सभी स्पीकर्स ने यही बात की कि जो राइजिंग इंडिया है, शाइनिंग इंडिया है, इनको उससे दिक्कत है. दिक्कत किस बात से है? अगर इंडिया राइज करता है, इंडियन राइज करता है, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि जो इनके मास्टर्स हैं, जो अब्रॉड बैठे हुए हैं, इंडिया से बाहर बैठे हुए, जो इनको फंड करते हैं, वो इनको फिर फंड क्यों देंगे? कि भैया तुम्हें काम तो लगाया था ये कि इंडिया के अंदर इंडियनिज्म की भावना को बढ़ने नहीं देना है, और वो बढ़ रही है, तो ये लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना. इस करके इनको ये छोटे मोटे षड्यंत्र करने पड़ते हैं. इनकी मर्जी है नहीं है, इनके जो मास्टर्स हैं उनको उनकी नजरों में रहने के लिए उनको ये चीजें करनी पड़ती हैं. अब सबसे बड़े मास्टर हैं, आप समझते होंगे, मैं पहले भी नाम ले रहा था, जॉर्ज सोरोस. में खोल के नाम लेता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लूंगा. वो आदमी चाहे कोई भी एक्टिविज्म इंडिया के खिलाफ होगा, आप उसके अगर जड़ में जाएंगे, उसके सोर्स में जाएंगे, तो आपको जॉर्ज सोरोस जरूर मिलेगा. अब उसे खुश करने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है. बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हो और जो संस्था का सबसे बड़ा मतलब चेयरमैन है, अगर हमने उसकी नजरों में रहना है तो उसको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ना कि नहीं भैया ये आदमी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है. यही काम इनका है. और इस वजह से इनको इंडिया के खिलाफ, इनकी जैसे सभी स्पीकर्स ने बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ, इनकी रोजी रोटी वहां से चल रही है. अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा. इस करके इनको डेली कविता कृष्णन ने उसकी 0% क्रेडिबिलिटी नहीं है उस लेडी की. आज तक आप उसका सोशल मीडिया उठा के देख लो, आज तक जो बयान दिए हैं उसने सब कुछ इंडिया और इंडियनिज्म, नॉट ओनली हिंदुइज्म, इंडिया और इंडियनिज्म के खिलाफ ही उसने सब कुछ किया. क्यों? क्योंकि उसी चीज के पैसे मिलते हैं उनको. ये बात. Rakesh Naik ji, I would like to ask you, yeah, many people are countering them, and as we have seen, I was reading that n number of emails have been sent to all the universities asking them, and there have been people who have gone to the universities and they have asked them कि भाई आप प्रूफ तो करो ना, यू आर सेइंग हिंदुत्व इज बैड, तो आप प्रूफ करके दिखाओ. एंड दे ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव. तो हम एज इंडियंस, जैसे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू टू काउंटर इट, एंड यू नो जो बुरा बैड नेम दैट दे आर गिविंग टू अस, उसको कैसे वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहिए. ये डिस्कोर्स बहुत, मतलब इट पेन्स अस, इट एक्चुअली मेक्स मी एंग्री, इट मेक्स मी सैड टू कि भाई हो क्या रहा है, व्हाट हैव वी डन. क्वेश्चन तो हमारे सामने वही आता है. First, I think I would not accept the fact that the universities were not part of it. They were very much a part of it. They're just playing a defensive role by saying, "Oh, they didn't ask us permission." ये सब होता ही, I mean, they are the incubating centers for all the world's problem. There is no denying the fact. I'll just give you a small example. Most of these universities are one of the largest venture capitalists in the world. It's not the traditional venture capitalists like me, but these universities which have billions of dollars. For example, Harvard is sitting on just $150 billion.
Imagine how much money they have. Now, what can we do for this? Yes, I would think this is the first time there is a people-based movement, not a government-led movement, but a people-based movement which has disrupted the very disruption they wanted to bring about the concept of Hindutva, which is very, very good. People have united on their own. This is what I call cohesion. They got upset, they took it down. Now, what can we as common people do? First and foremost, I think we should shed the tolerance which in Hindus we see, chhod do, I mean, ignore karo. That won't work. With resistance only you win. So please object first. Second, be very, very, mind your language. One of the problems with new age aggressive Indians and Hindus is we go very ballistic. That should not be the case, because you get pushed down very fast. Third, do a little research and come out with facts. Fourth, I think you could write to those universities. You can also go on various social media platforms and provide your point. Fifth, create special interest groups, create advocacy centers. And this is on the people level, but on the government level, I have a big complaint with the government of India, because we have, if you see the while most of us are talking of symptoms of people like Soros and all that, the actual problem cause is not just him. The cause is the think tanks. If you look at the think tanks of the world, about 2,000 plus think tanks are there in United States, which is actually advocating, pushing various causes of US government. It runs from CIA's conspiracy theories to these defense industries pushing their products and getting market. It is as wide as that. Now, if you look at all the think tanks in India, India is the second largest think tank market in the world. We have about 400 to 500 plus, all branches and subsidiaries of them. Now, you name one Hindu think tank. I don't agree that Vivekananda Foundation is a Hindu think tank. It is all mixed with a lot of people. But there isn't any Hindu think tank which you can call as genuine, homegrown, thinking-based people. Intellectualism is lost. In Hindu culture, I think, Hindu culture survived, one, because of the individualistic practices and because of the intellectualism that was there in our thinkers and philosophers. So we need to get back at them. So, cultivate a lot of think tanks, bring in data-backed, analysis to counter them, tell them, if you look at some of the top influencers of Hindu concepts, they do a lot of research, they bring nice graphs, they bring details, which can't be countered. If you just tell it in English, people can just go berserk and talk many things. So I think, that bit is missing. If that bit comes into our narrative, I think we are winners. By default, 1.5 billion, 1.3 billion people, you can't take them down just like that. So think tanks is what we need. Quite true. सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि और क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो नैरेटिव है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं ऐसे पूछूं एक प्रश्न आपको. We are a democracy. Democracy is a numbers game. Hindus have the numbers. Why don't we show our strength? और लोग एकता की बात करते हैं तो एक हो जाते हैं. हिंदू जरा सी बात करता है तो बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल कर दिया, आरएसएस आ गई, ये आ गई. हमारी एकता से इनको भय क्यों है? यदि है तो भय दिखाओ ना. अपने क्यों डर जाते हैं कि क्रिटिसिज्म होगा? कम क्रिटिसिज्म सुना अपने लोगों ने. जब सुन ही रहे हो तो शो योर स्ट्रेंथ, गो अहेड. लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क्यों हमारी बीजेपी की सरकार इस चीज में बोल्डली आगे क्यों नहीं जाती है. मोदी जी इज ट्राइंग टू प्ले टू मच फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज करेक्ट. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉन्ग रोप दे रहे हैं, पीपल आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो भी हो रहा है. लेकिन इस बीच में हार्म कितना हो रहा है? बट आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग बेटर फिगर्स एंड बेटर रीजंस टू डिले इट. लेकिन अपने लोग जो को पॉलिटिक्स से अलग छोड़ के अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े? मेरा बार बार प्रश्न है. हमारे हिंदू भाइयों से मुझे उत्तर नहीं मिलता है. हमारे घर में पहले हेड गियर के बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे. फिर हमारे परिवारों ने कह दिया कि शादी में, ब्याह में खाने के वक्त गए,
ये क्या टोपी पहन के आए, उसको तो दी, लेकिन जालीदार टोपी तो वो पहन लेते हैं, वो भी हेडगियर है, तो वो नहीं, हमारी क्यों? तो हिंदू कहाँ हार गया, कहाँ खो गया, मुझे ये खोज करनी है। पॉलिटिक्स की बात में आके, कि सेकुलरिज्म में झांसे में आ गए, कि वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में कि अलग दिखना चाहिए। मैं खोज रहा हूँ इस प्रश्न को, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। और मेरे मन में जो भावना है हिंदुज्म के बारे में, औरों के मन में क्यों नहीं है, वो ओपनली क्यों नहीं इसकी बात करते, इसका इंसाफ दिलवाइए ना आप, तो थोड़ा सा राकेश अग्रवाल जी, पता आप लगे। दे दिया। हाँ बिल्कुल, आप ही के पास आ रही थी, इसका जवाब आप दीजिए। ऐसा है कि सनातन समाज है हिंदुस्तान में, पहली बात वो एकजुट नहीं है। कहीं राजपूत को लेके, कहीं ब्राह्मण को लेके, कहीं बनिया को लेके, कहीं दलित को लेके, जाट को लेके, उसके बाद हिमाचली है जी, पंजाबी है, तमिल है, उड़िया है। ये इस आधार पे हमें बांटा गया है। सबसे मुश्किल काम है हिंदुओं को एक करना, सनातनियों को एक करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आज जाऊंगा कि हाँ जी हमने सनातन धर्म को एक करना है, अरे ये तो बनिया है यार, ये तो बनियों को एक करेगा। उसके बाद मान लो कोई शर्मा जी जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं भैया हमने सनातनियों को एक करना है, नहीं यार ये तो पंडित जी है, ये हमें क्या एक करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें बारीक बांटा गया है। मुगल्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, कांग्रेसीज हैं, इन्होंने हमें बहुत बारीक बांटा है। और धीरे धीरे जो ये बंटवारा है ये खत्म होता जा रहा है, एकजुटता आ रही है लोगों के बीच में। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले विषय उठा था कि जी ये सब अब्रॉड से चल रहा है, ये हमारे यहाँ के उनके चमचे हैं, ऐसा कुछ विषय चल रहा था ना। तो हमें बांटने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। अब आजादी के टाइम पे नेहरू जी ने क्या किया कि सभी कम्युनिस्ट जो हैं यूनिवर्सिटीज उनके हवाले कर दी। हमारा इंडिया का जो सोचने का लेवल था वो डिसाइड करते थे कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट की जो सोच है वो अपने आप को इंडिया के साथ नहीं जोड़ते थे, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है, लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भैया ये चीज हमारे साथ जुड़ती नहीं है। कम्युनिस्ट जो हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ नहीं रहा है, हमारे साथ वो जुड़ रहा है जो इंडिया से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे जैसे रेनेसां कहा गया, ये रेनेसां का विषय है। हम लोग रेनेसां में हैं, पुनर्जागरण में। तो बिल्कुल सही कहा कि ये रेनेसां की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे आप अगर जो यूनिटी आज हिंदुओं के बीच में, मेरा मानना है कि 25% अगर यूनिटी आई है और इसी स्पीड से हम चल रहे हैं, आने वाले कुछ समय में हमारी यूनिटी का लेवल बढ़ता है। तो अभी तो दिक्कतें होनी इनको कम है। अभी अगर हमारी यूनिटी इसी हिसाब से चलती रही, इनको दिक्कतें और ज्यादा होंगी। फिर ये अपने असली चेहरे लेके सामने आ जाएंगे। अभी कैमोफ्लेज लेके बैठे होंगे, असली चेहरे लेके आएंगे फिर। ये बात मेरा ये मानना है। नटराजन जी, एक मुझे लगता है कि जैसे आप सभी ने बोला है, मुझे भी यही लग रहा है कि इनको डर लग रहा है कि भाई हिंदू अपना जो अस्तित्व, जो हम लोगों ने सिस्टमैटिकली हिंदू के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की थी, वो अस्तित्व वो लोग फिर से ढूंढ के पा रहे हैं। और वो ढूंढ के पाएंगे तो फिर से वही एंशिएंट इंडिया का हिंदू हो जाएगा, और फिर हम लोग तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें पता चला है कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी ये लोग लेके चले गए थे। अब उसी के भरोसे पे वो लोग अपना बता रहे हैं, उसी के भरोसे हम लोगों की हर चीज को डिबंक करने की कोशिश करते हैं। एंड आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं, यस, आप लोगों ने ये ऑलरेडी बोला है कि इनको अपने अस्तित्व का डर है। एंड और ये पॉजिटिवली भी लेना चाहिए कि हाँ भाई डरो, आप लोगों के ये डर के वजह से आप लोग गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं। नटराजन जी, आप कुछ 2 शब्द बोल के मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रोग्राम एंड करेंगे कि भाई हाउ विल यू टेक इट पॉजिटिवली। या दे आर ट्राइंग टू हार्म अस, बट एक्चुअली दे आर गेटिंग एंट्रैप्ड। मुझे तो ये दिखता है, एंड दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड वेरी वेरी बैडली एंड एंट्रैप्ड। यस, I think already you said the right word.
they are getting trapped in their own maneuvers. They have entered into that swamp land, जो एक दफा घुस गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल है. They might have temporary wins, maybe, but what has happened is that they have woken up not just a tiger, but they have woken up a sleeping elephant. Okay, and in my view, what is going to happen is, like I said, many of us here are ex-seculars. हम लोग जाग गए हैं. Okay, that's why everyone is waking up to the realities. तो इसमें तो सब लोग when they between the age of 25 to 30, everyone says, I don't believe in this. ये क्या है? Temple जाना है क्या है? By the time he is 45, he or she is 45, they have become ex-seculars. They see the politicians giving away to vote bank politics, what we call it as. And when there is injustice, automatically the people have started rising, okay, raising their voice, and the general feeling that why can't be, if others can be united, why not us? And believe me, just being united is not going to mean any harm. It is about a societal, to use the word of Rakesh Naik ji, okay, that cohesiveness, if it can bring about, that's the best thing, that bonding jo chahiye. We can still be practicing our individual ways of doing things. They are beautiful practices. But the problem is, हमें दिक्कत हो ना हो, बाकी लोगों को दिक्कत होती है. वो क्यों कर रहे हैं? We have some beautiful practices. Okay, उसको they ridicule. I think I can't really tell the way Rakesh Naik has said. He made a beautiful chain reaction of events, syncretization and conversion. Okay, that's where the problem is. सबको agenda होता है ना? Agenda होता है. कि there are two-pronged agendas. Decimating the ancient civilization is one of their goals. This India, this our dharma, you see, it has seen so much of turbulations. अगर कोई ये सोच रहा है कि some 4500 so-called scholars अगर उधर जाकर चिल्ला शोर करेंगे, ये धर्म मिट जाएगा, then they are living in fool's paradise. They are living in fool's paradise. Yes, there will be challenges, and Hindu unity is going to be a very, very tough thing. Cohesiveness is more important. Cohesiveness and collaboration, that is very important. Forget the unity part, automatically आएगा. ये दो आप try करो, बाकी आ जाएगा. Yes, Naik ji. And teach all kids to fight, like karate, एक दो तीन लोगों को मारने का, गिराने का. I think we need to teach them that, otherwise we are all going to be darpok. And to add to Rakesh Naik ji, not only karate, but the indigenous fighting martial arts. Yeah. So that is even better. Mashallah. Not very few people, not many people can counter that. Exactly. मैं ना आज बोलना चाहती हूँ. I want to thank the panel. Honestly, I have actually enjoyed myself. इतना rich thoughts है, and मैं ये dismantling हिंदुत्व को बोलना चाहती हूँ कि ये rich thoughts को आप counter तो नहीं कर सकते. आप लोग सिर्फ और सिर्फ you come in with some kind of bogus issues and you try to bad name us, but that is not enough. Proof तो करिए. जैसे बाकियों ने बोला है वैसे हम भी बोल रहे हैं. आप बोलते हो ना कि RSS is equivalent to Taliban, हिंदुत्व is equivalent to Nazism, तो आप उसको प्रूफ करिए. सिर्फ हवे में बात करना हम लोग बहुत सालों से सुन चुके हैं, एंड आप लोगों को रियलाइजेशन होना होगा कि जब तक आप लोग यही सब बातें करते रहेंगे ना, आप हम लोगों को, आप एक्चुअली हमको करने की जरूरत नहीं है, आप हमको यूनाइट कर रहे हैं. एंड फॉर दैट थैंक यू, बिकॉज हम इंडियंस हैं और हम आज बोल रहे हैं आई एम एन अनअपोलोजेटिक हिंदू. डील विथ इट. नहीं डील कर पाते, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन. आई एम प्राउड, आई एम अ हिंदू. आपको नहीं अच्छा लगता है? Yeah, I think everyone over here is proud. So please change your game
आपका गेम बहुत घिसा पिटा हो गया है, चेंज इट, वी आर नॉट बाइंग द स्टोरी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर प्रोग्राम। देखते हैं हम भी कि आपके प्रोग्राम का होता क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, एंड आई रियली लव्ड इट। एंड आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स, प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, एंड आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग अपना आवाज उठा सकते हैं। एंड आवाज उठाने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। प्लीज वो लिटियंस जैसे ना कॉकटेल सिपिंग एसी रूम में बैठ के बातें करने वाले नहीं होइए, रियल सेंस में हिम्मत जुटाइए, आवाज उठाइए फॉर द राइट कॉज। डोंट गो एंड डू एनीथिंग विच इज गोइंग टू हार्म द मदरलैंड। मदरलैंड का हमेशा हमेशा उसका साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच and see you again very soon. Right.